Alter back once again with my daily cricket stream. वैसे मैंने अभी सोचा सुबह जब ब्रेकफास्ट कर रहा था, I said let's give this live stream a name, क्योंकि अब इसी चैनल का नाम है, आप मुझे जानते हैं, आप चैनल से वाकिफ होंगे, बट हम लोग जो आप और मैं जो बात करते हैं डेली, और जब मैं कॉफी लेके आपसे जुड़ता हूं तो मैंने कहा व्हाई नॉट कॉल दिस लाइव स्ट्रीम, लेट्स गिव इट अ नेम, फॉर रिकॉल वैल्यू. तो आई थिंक आई एम गोना कॉल इट कॉफी. एज ऑलवेज मैं कॉफी लेके आता हूँ हर लाइव स्ट्रीम पर, और क्योंकि हम क्रिकेट की बातें करते हैं तो लेट्स कॉल दिस लाइव स्ट्रीम, इट्स नॉट अ पॉडकास्ट एज सच, पर इट्स अ डेली लाइव स्ट्रीम जो मैं रेगुलरली करता हूँ आप लोग से बातचीत करने के लिए. तो मैंने सोचा इसका नाम रखते हैं कॉफी एंड क्रिकेट विद जेमी. क्या लगता है? यस, नो, जो भी है कमेंट करिए, शेयर करिए, आप ही का चैनल है, आपके लिए मैं चलाता हूँ, आपके व्यूज के लिए, आपके कमेंट्स के लिए, आपके फीडबैक के लिए, आपकी आवाज आए, तो इसलिए मैं ये लाइव स्ट्रीम करता हूँ. तो एनीवेज, गुड मॉर्निंग, इट्स फ्राइडे. होपफुली इट्स अ गुड डे फॉर यू. आई एम गेसिंग आप में से बहुत लोग ऑफिस जा रहे हैं या दफ्तर में ऑलरेडी होंगे या कुछ वर्क फ्रॉम होम कर रहे होंगे. जहां से भी है, साथ में कमेंट के साथ ये बताइए कि आप मेरे साथ कहां से जुड़े हो. मैं बहुत ही इंटरेस्टेड हूं ये जानने के लिए कि वेयर आर यू लवली पीपल कनेक्टिंग फ्रॉम, which part of India, outside of India. Kiran has already said hi. Kiran is a regular viewer and commenter from Nepal. So welcome, Kiran. आप जो भी यहाँ पे आए हैं कमेंट करिए. ऑफ कोर्स लाइक बटन ठोकिए, जितना भी आप लाइक ठोकेंगे इतने ही इस वीडियो की रीच बढ़ेगी. बट as well as your comments, just say hi and let me know where you're from. हो सके मैं आपके शहर आ चुका हूँ या कुछ प्लान हो कभी फ्यूचर में आने आने के. एंड ऑल्सो वेयर आर यू जॉइनिंग फ्रॉम, बिकॉज 10:18 इन द मॉर्निंग मैं तो घर से काम करता हूँ अक्सर, तो आई एम होम, बट आप लोग कहाँ पे हैं? आई ऑलवेज लाइक टू नो हु आई एम टॉकिंग टू एंड अ बिट अबाउट यू एज वेल. सो आई हैव अ सिप ऑफ कॉफी. Yes, the same mug from the lovely people at Coffee Culture in Bhilwara. इनके 7-8 चेन्स हैं वैसे across India, Surat and Mumbai and Jabalpur and a couple other places I'm forgetting. But anyway, let's get the stream going, दोस्तों. Good morning. मैं आज आपसे थोड़ा बात करना चाहता हूँ about a new story that came out last night. मैंने सुबह देखा. It's a PTI report, Press Trust of India. एंड इट इज सेड दैट अगले महीने के 7 तारीख जो बीसीसीआई एपेक्स काउंसिल की मीटिंग होने वाली है उसमें कई चीजें डिस्कस करेंगे. बट द मेन टेक अवे दैट आई टुक फ्रॉम दैट आर्टिकल, एंड सूत्रों के अनुसार, मतलब जो कुछ अक्सर आप सुनते हैं वो हो ही जाता है. द बीसीसीआई इज अपेरेंटली लुकिंग एट शिखर धवन टू लीड, हम कह सकते हैं इंडिया बी टीम आप कह सकते हैं, इस साल की एशियन गेम्स में. एशियन गेम्स दोस्तों सितंबर, लेट सितंबर टू फर्स्ट और सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये चाइना में होने वाला है. ठीक है, नाउ बिकॉज ऑफ कोर्स दिस क्लैशेस विद द एशिया कप, दिस क्लैशेस विद द वर्ल्ड कप, तो जाहिर सी बात है कि बिल्कुल जैसे कि 98 में हमारी हमारी एक कॉमनवेल्थ गेम्स की टीम गई थी. यस किरण, आई थॉट यू वुड बी इन काठमांडू. थैंक यू फॉर शेयरिंग, लव यू टू हैव यू हियर अगेन. तो जैसे कि 98 में कॉमनवेल्थ टीम गई थी, उस टाइम पे, उस टाइम इंडियन टीम टोरंटो में खेल रही थी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 98. तो एक सेकंड स्ट्रिंग या थोड़ी हल्की सी वीक टीम गई थी. The team was split between I think a second string team went to Toronto to play against West Indies and Pakistan, और एक अच्छी मतलब ठीक ठाक टीम गई थी कॉमनवेल्थ गेम्स, द कॉमनवेल्थ गेम्स which were in 98. उसके बाद से दोस्तों ये कॉमनवेल्थ और ऑफ कोर्स ओलंपिक्स में तो है नहीं एशियन गेम्स, बट कोई भी ढंग की इंडियन मेंस टीम ऐसे टूर्नामेंट पे नहीं गई. इस बार जो T20 फॉर्मेट में क्रिकेट का जो एक सेक्शन है एशियन गेम्स पे, एज पर दिस पीटीआई रिपोर्ट, द बीसीसीआई, ऑफ कोर्स इट विल बी अ सेकंड स्ट्रिंग, इट विल बी अ बी टीम, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, बिकॉज हमारे जो मेन खिलाड़ी हैं वो ऑलरेडी वर्ल्ड कप की तैयारी, और फिर वर्ल्ड कप शुरू भी होगा एशियन गेम्स के समय. They're considering Shikhar Dhawan. Now, Shikhar Dhawan is 37 going on 38. काफी समय से 7-8 महीने हो गए, if I'm not mistaken, वो इंडिया के लिए वनडे नहीं खेल चुके हैं. टेस्ट से तो काफी पहले वो हट चुके हैं, या आप कह सकते हैं उन्हें हटाया गया, और फिर T20 में तो काफी साल से उन्हें नहीं लिया गया. आई थिंक दे वांट टू गेट सम यूथ, एंड ऑफ कोर्स ही कीप स्कोरिंग रन्स इन द आईपीएल. But whatever it is, for whatever reason, until middle of 2022, yeah, second half of 2022, Shikhar Dhawan was only an India player. Now, last year, Shikhar Dhawan would lead the Indian team whenever Virat Kohli at first and then Rohit Sharma were either rested or injured, जो भी कारण. तो बेसिकली शिखर धवन, और ये मैं बहुत बार ये मैं मजाक के तौर पे अलग अलग शोज पे जाता हूँ, और जब भी शिखर धवन का नाम आता है तो मेरा ये मानना था कि पिछले साल यानी कि 2022 में
शिखर धवन के पास सबसे आसान काम था इंडियन क्रिकेट में। उनको एक एक ए टीम या बी टीम, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, सेकंड स्ट्रीम, उनको एक सेकंड स्ट्रिंग इंडियन टीम की कप्तानी करनी पड़ी। श्रीलंका और कौन, जिम्बाब्वे जैसे टीम्स के साथ उन्होंने लीड किया। आराम से वो बायलैटरल सीरीज जीत गई श्रीलंका, इट वाज बांग्लादेश। एंड उसके बाद उनको जबरदस्त मस्त रील्स बनाने थे। एंड जोक्स असाइड, इट वाज वेरी एविडेंट टू मी दैट अगर शिखर धवन को वर्ल्ड कप यानी कि इस साल के वनडे वर्ल्ड कप के लिए चुना जाएगा, तो ही वुड हैव टू प्ले बियॉन्ड द बांग्लादेश टूर ऑफ लास्ट ईयर, बट आफ्टर न्यूजीलैंड टूर लास्ट ईयर वो नहीं दिखे। क्योंकि शुभमन गिल का राइज देखिए, शुभमन गिल ने ऐसी बैटिंग करी पिछले साल वनडेज में कि इट वाज इम्पॉसिबल टू ड्रॉप हिम। A lot of his runs, यानी कि a lot of Shubman Gill's runs last year came while batting with Shikhar Dhawan. But I always said last year, मैंने भी कहा था अलग अलग शोज पे, मैंने आर्टिकल्स पे लिखा कि वनडे वर्ल्ड कप के लिए रोहित शर्मा 35 इंजरी प्रोन, शिखर धवन 38 बाय द टाइम द वर्ल्ड कप स्टार्ट्स, और फिर विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म मिड 30, ये आपके टॉप थ्री नहीं हो सकते। आपको वनडे वर्ल्ड कप के लिए एक युवा खिलाड़ी इनके बीच डालना पड़ेगा। और ठीक वही हुआ, शुभमन गिल आए और शुभमन गिल टीम के एक ओपनर बनेंगे। सो आई एम नॉट सरप्राइज्ड दैट शिखर धवन इज नॉट पार्ट ऑफ इंडियाज वन डे प्लान्स। बहुत लोग से मेरी बहस भी होती है अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और एक दो शोज पे कि क्यों नहीं शिखर धवन, डोंट यू वांट solidity, don't you want experience? You do, but यार शिखर धवन will be 38 when the World Cup starts. ऐसा नहीं कि उनके योगदान कुछ कम थे। हाँ, भले ही उनका स्ट्राइक रेट 70-71 का था लास्ट ईयर, which is frankly unacceptable in the modern game. And yes, शिखर धवन has a fantastic record at IC events, but I get the fact कि आपके पास रोहित हैं, विराट कोहली हैं, आप एक थोड़े एंकर टाइप या स्लो प्लेयर आप नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि एक युवा खिलाड़ी आ जाए और शुभमन गिल आ जाए। So that's the background to what I felt about शिखर धवन। कल की जो खबर है, इफ इट्स ट्रू दोस्तों कि शिखर धवन एक बी टीम को एशियन गेम्स में लीड करेंगे, तो मेरा ये सवाल है, इज दिस द बीसीसीआईज वे ऑफ सेइंग फेयरवेल टू शिखर धवन? ये फेयरवेल गेम का जो कॉन्सेप्ट है, मैं इसके फेवर में ज्यादा नहीं हूं। सम प्लेयर्स हैव गॉट इट, ऑफ कोर्स सचिन तेंदुलकर गॉट वन, fully fully deserved. Ashish Nehra got a very staged one, but Rahul Dravid को नहीं मिला, सहवाग को नहीं मिला, लक्ष्मण को नहीं मिला, गांगुली को मिला, yes, क्योंकि वो समय कैप्टन थे। And but very few players get these farewell matches. But maybe because उस समय जैसे मैंने कहा था वर्ल्ड कप की तैयारी होगी और वर्ल्ड कप शुरू होगा, but maybe it's a BCCI's way of saying, Shikhar Dhawan, we're sorry कि we cannot get you back in the one-day team, but you've been such a fantastic white ball player for us. Maybe if he does end up leading India the Asia Games, it could be a farewell game. What do you think? Monroe is back. Welcome back. Sad that Dhawan, who did so much during World Cups, is now going as a second string captain. Well, it's pretty much like I was saying, Monroe. All of 2022, whenever Shikhar Dhawan was made to lead teams, they were sort of second string teams. There was no Kohli, no KL Rahul. KL Rahul, he came back in Zimbabwe, but it was a bit of a second string team that he had to lead three times last year. So yes, it's sad, but when you're 37, 38, you're at that stage where you are often pushed aside. So yes, you do feel bad, but I totally get what the situation is. Professor is here, he's back. Kiran saying once Dhawan used to be our best ODI batsman. Absolutely, he was very good in 2019. Rohit Sharma overtook him with those 500s in the World Cup. But it happens. Look, Shikhar Dhawan is very fit. I think he's fitter than many people still playing for the Indian team. But he'll be 38 when the World Cup starts. And it's just tough, yeah. I mean, you have someone like Shubman Gill. How can you keep him out? So tough. शाहनवाज हैदर जुड़े हैं हमारे साथ, स्वागत है। गुड मॉर्निंग जेमी, at least Shikhar Dhawan getting a chance to win a medal in Asian games. I think obviously if the men's team is a decent team, which I think it should be, or Dhawan है, I think India have the best chance to win a medal, or at least कुछ तो medal आ जाए यार। 10 साल से हम वेट कर रहे हैं किसी बड़ी ट्रॉफी की, फेयरवेल ट्रॉफी की, मेडल की, whatever you want to call it. So hats off to him. Kumble got an epic farewell. Yes, Kumble got an epic farewell. Kumble and Ganguly, because they had announced, they had announced it. So especially Saurav Ganguly, Chinnaswamy Stadium, and the press conference gets done, and Saurav Ganguly, all the media is getting up, and Ganguly says, "Just one more thing, guys," and then he announces retirement. Uske baad to, of course, unka farewell tha. But yeah, really glad to see you took 4 wickets. Thank you. I've got the trophy behind. You can see. यार मैं तो स्पिनर हूँ यार, मेरे उम्र के हिसाब से और फिटनेस के हिसाब से अब पेस वेस के सपने तो मैंने बहुत साल पहले छोड़ दिए। स्पिनर, आई यूज्ड टू फैंसी माय सेल्फ एज एन ऑलराउंडर, बट
I've not taken my batting seriously for many, many, many years. So I'm very much an off spinner. And yeah, thank you. Thank you for that. If I had to pick the squad, said Ashutosh, Dhawan, Jaiswal, Sai Sudarshan, Tilak, Dubey, Jitesh, Krunal, Deshpande, Harshit, Bishnoi, Yash Thakur reserves, Tewatia, Nitijana, Nehal, Gudera, Akash Madhwal. That's a damn good squad, Ashutosh. And I'm just thinking, none of these players are going to be part of India's World Cup squad, like we discussed yesterday. That's a very good mix. In fact, that's predominantly, अगर हम कृणाल और धवन को एक तरफ डालें, that's predominantly young players of the future, and some like Dubey and Jitesh, who've been around for a while. They're in their mid to late 20s. That's a good, I'm thinking of Rahul Tewatia. There was a time, Ashutosh, when Rahul Tewatia was very near selection, but he doesn't bowl anymore and he bats so down. I think he's actually got a raw deal. So it's interesting that you've taken his name. Nitish Rana ek do match खेल चुके India के लिए. I might even have him bumped up from the reserves into the main squad, because you do want that one more. I think one more sort of experienced hand is required in this squad, and Nitish Rana's name is really standing out. That's a good idea, yeah, Ashutosh Bajpai. Hopefully the BCCI selectors can take a cue from you. Dhawan, Jaiswal. Yeah, Jaiswal will not be playing the World Cup. He should definitely go. Sai Sudarshan, Bilkul Tilak. Good squad, man. Your keeper is Jitesh. You got Kunal for the experience. You need that. Desh Pandey, pata nahi yaar, thode महंगे the wo. But yeah, I like that. I like that. So much knockout losses in last 10 years. Nothing hurt like 2019 semi-final. हाँ कह सकते हैं. Nowadays it's frustration, anger. Yeah, I think it's definitely frustration. Anger ka to nahi pata, but it's definitely frustration, because this team has never really lacked for any talent. It's just like they keep saying, "Nare, bas 15 minute hamare kharab gaye, 5 over hamare kharab gaye." It's definitely frustrating. Is Prasid Krishna fit now? No, Pranav. Unfortunately, he's not anywhere near 100%. I would have loved to have him in the World Cup squad, but as well as the WTC final. But wo nahi hai fit. By the way, you guys like the name that I've given our daily chat, Coffee and Cricket with Jamie Alter? क्या ठीक है? क्योंकि मैं तो कॉफी पीता हूँ हर शो पे. आप लोग भी कमेंट्स करते हो मेरे कॉफी पीने की चॉइसेस पर कई बार. तो आई थॉट, व्हाट, rather than just say YouTube live or live stream or live chat, let's give it a name, give it some recall value. Coffee and Cricket with Jamie. आप लोग आते हो हर दिन, जब आपको नोटिफिकेशन मिलता है आप लोग जुड़ते हो मेरे साथ. Feels good. But let's get back to the topic. Do you think it's right for Shikhar Dhawan, if it happens, if that PTI report is indeed true? Do you think it's right that he be picked? Does he deserve a farewell? William Saliback is injured. What a name! Hello, Jamie. How's it going? It's going very well, my friend. Welcome to the live stream called Coffee and Cricket with Jamie. So yeah, going back to the topic of today's show, since it's a rather slow news day और कुछ तो हमें बात करना है क्रिकेट को लेकर. आप इस बात से सहमत हैं? Are you in favor of Shikhar Dhawan getting the chance to lead? I'm all for it. It's still going to be an Indian team. It's going to be recognized as a T20I international. It's the Asian Games. Indian cricket can take any medal, any trophy, any accolade that it can get right now. I think they should go for it. और शिखर धवन का नाम मेरे हिसाब से, because look, he's fit, he's hungry, he's not been really out of form. He probably got a raw deal, many will say last year. पर मैं तो इस बात के फेवर में हूँ कि अगर आपको एक टीम भेजना है वहां पे एशियन गेम, तो शिखर धवन को डालो. बिल्कुल. Professor is saying, I find it amusing when players give an excuse that we just played an hour cricket poorly. I mean, that's why you lose. Yeah, yeah, yeah. Achha, you've said loose instead of lose. Two O's, just one O. You're not supposed to. Absolutely. I've said this, my friend Professor, in many, many shows. I've often given the example of American sports, not so much football. Football, they do say things, but in American sports, you have a free pass to say pretty much whatever you want to say. और वहां पे वो कहते हैं कि हम मैच इसके कारण हारे या इसके कारण. They don't say बस 15 मिनट हमारे खराब गए, बस 2-3 ओवर्स हम कम. They say नहीं भैया, हम यहाँ पे मैच हारे. They find the moment or the brief passage, they identify it, they say what's wrong, and then they make a damn good job of fixing that. हमारे इंडियन क्रिकेट, इंडियन स्पोर्ट में होता नहीं. हॉकी टीम देख लीजिए, इतने साल से मैं हॉकी देख के आ रहा हूँ, हमेशा लास्ट क्वार्टर में या सेकंड हाफ में या लास्ट चंद पल में मेंस टीम जो है एंड वुमेन्स टीम वो अक्सर गोल खाती है. फिर हम सुनते हैं कि हमने 75%, हमने 80%, हमने इतना 3 क्वार्टर डोमिनेट किया था.
Stop saying it. Just say भैया हम रहता हमने यहाँ फैलाया, गलती उसकी थी, गलती इसकी थी, बट हम इस सबको आगे लेके हम आगे बढ़ेंगे. पता नहीं, we give these flimsy excuses. Even the WTC final, what was Rohit Sharma and Rahul Dravid saying? Yeah, I get it. I get where your frustration comes from. Dhawan should get to lead, says Kiran. Yes. Pranav saying, I like Shikhar Dhawan as a player and an individual, but to be honest, he's not that good of a captain. Again, I get where you're coming from. But again, his job was to lead second string teams against Zimbabwe, against what was it, Sri Lanka, maybe West Indies. So his job was always there, and such was the quality of opposition that he didn't have to do much. But I get your point. He's not some astute captain, and you're right. Even in the IPL, he's shown a couple weak areas, especially with which bowler to bring on at one point, as well as what to do in the toss. Like who chooses to field in a knockout match. We saw that in the dying stages of this IPL. But as I said, it's the Asian Games. There's no great competition. It's still going to be seen as a representative Indian team. So by all means, let Shikhar Dhawan go and have some fun. बिल्कुल शाहनवाज भाई भी इसके फेवर में है. Ashutosh saying I favor Dhawan because he's been consistent as a batter in IPL. I mean, look, if Shikhar Dhawan's name is being taken about, then I don't think Nitish or Krunal really stand a chance because of the stature of Shikhar Dhawan. And I think more than that, the BCCI is actually, जो मेरा gut feeling है, it is going to be a sort of farewell. कि देखिए वर्ल्ड कप चल रहा होगा, आपको तो कोई याद नहीं कर रहा होगा. बाय चांस आप वर्ल्ड कप के बीच आप वहां से गोल्ड मेडल लेके आए, तो ये आपका farewell होगा. Give him a chance to smile. He's got that lovely smile, that grin. He's a jolly fellow. So I think it's more of a let's just give Shikhar Dhawan some closure. I think that's the way they're probably looking at it, but I don't have any proof about that. Monroe's raised a valid point. Asian Games, we can do it because the team won't have those superstars, that aura, and that negativity. That's also very true, but also there's no real good competition in the Asian Games. So it's India's gold medal to win. That's also the fact as well. When did the BCI decide that they'll be sending a team to the Asian Games? This was decided a long time ago. I think it was the start of the year, or maybe it was Feb. I think that this news came out, or at least that was when I was informed about it. So it's been a while. Yeah, we've not sent one since 2010. Yeah, no, they've now realized, yeah, we need to send it out. We need to branch out cricket. We need to support cricket at these quadrennial games. So I think it was Jan or Feb, if I'm not mistaken. No, these will be T20 internationals, William. Yes. सर धवन को खेलना चाहिए क्या? एशियन गेम्स जाइए ना, बिल्कुल बिल्कुल खेलिए. ये फिर भी एक इंडियन टीम है ना, ये अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लेवल का टूर्नामेंट है, तो आपको इनको भेजना पड़ेगा. बिल्कुल 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 मुफ्त का गोल्ड मेडल है. सीएसके प्लस जीटी को भेज दो भाई. लाइक यू सेड आशुतोष, मोस्ट ऑफ द स्क्वाड will be picked up from this year's IPL stars, so वो तो हो जाएगा. Well, the stars which are not playing in the World Cup. So, like I said, look, we'll find out in the days to come. 7 July ko hai. Yes, Asian Games is being played. It's September 28th. Hang on, I made some notes here. One second. It is September 27th to October 8th in China, Hangzhou. I hope I'm saying it right. Hangzhou, China. September 27th to October 8th. The World Cup starts October 5th. So it's a direct clash with the one-day World Cup. तभी ये players जाएंगे. Chance of players like Mohit Sharma, Rahane. Ah, possibly Mohit Sharma, I would say definitely, because he's not as a regular first-class cricketer as Rahane. Rahane, pata nahi yaar. Rahane, India is not playing test matches that time. He's not in the one-day team, but he might want to play the Ranji Trophy because Ajinkya Rahane has got a very surprising second lease on life. He was dropped a year and a half ago. He was recalled, was India's best batsman at the Oval a couple of weeks ago. और उसके बाद से he's been made the vice captain. So he probably realizes भाई अगर मुझे vice captaincy का tag दिया गया है, अगर मुझे वो status दिया गया है, it's probably better that I keep myself in peak form for test cricket because he's only a test player, right? और इंडिया के पास केवल 4 टेस्ट मैचेस हैं इस साल, 2 वेस्ट इंडीज में और फिर दिसंबर में टीम जाएगी साउथ अफ्रीका. तो if Rahane stays fit till then, he's probably got a much better chance of playing Test cricket if he plays Ranji Trophy. So I don't think Rahane would be considered, Pranav, for the Asian Games. But who knows? Hello, Pavan Suresh. Rinku Singh should be sent to the Asian Games. I think he probably will.
I think, from what I'm hearing, he's going to be part of India's T20I squad for those 5 matches in the West Indies next month. And in case he's not choosing to play the Ranji Trophy, that's also a very good name. So, पर उस समय T20 में क्या चल रहा है? Asian Games होगा. I don't think Rinku's. In fact, no. Rinku Singh is going to get into India's one-day squad. Like I said yesterday when I was talking, I think it was Ashutosh also asked a similar question yesterday about certain players. Very obvious to me that India's one-day squad is not going to have any new names. So Rinku Singh, yes, William Saliback is injured. क्या नाम है? What's your real name, by the way? Rinku Singh should be sent to the Asian Games if he's not doing anything else at that time. But yeah, let's just have a look at Shikhar Dhawan's record, by the way. मैंने पीछे लगाया है. शिखर धवन का लास्ट टेस्ट मैच 2018 में था. इनका आखिरी ओडीआई दिसंबर. हाँ, he was part of Bangladesh. Last T20I December 2022. Last T20I was 2021. So it's coming up to almost 2 years that he's not played a T20I, but he's fit. He consistently scores runs in the IPL. So I get why, if this PTI report is true, which I'm guessing it is, Shikhar Dhawan is a good name to lead India. Pak playing in Asian Games. Pakistan will be at the Asian Games. I think most. उसमें पाकिस्तान आएगा, उसमें श्रीलंका आएगा, उसमें बांग्लादेश आएगा. You get at least in the women's game, you get China and Thailand playing. Let me just see who all is playing. Let's see how many teams are there. The final call will be taken on. एक second, the final Asian Games 2023. But yeah, एक second, I'm just checking it out. The final call, like I said, the final call will be taken on July 7th when the BCCI has its Apex Council meeting. यार मुझे पाकिस्तान का कुछ मिल नहीं रहा है, but I'm very certain that Pakistan will be there, my friends. एशिया कप और आयरलैंड टूर क्लैश करेंगे क्या? नहीं, एशिया का, हाँ, एशिया कप का हल्का सा क्लैश रहेगा, because if the Ireland Asia Cup is September, Asia Cup के dates ही नहीं आया यार. India versus Ireland is in August September, है ना? We don't even know the Asia Cup dates. Huh, August 18th to August. No, we're safe. We're safe. The Asia Cup will start after August 23rd. So it'll just miss. It'll just miss. कोई clash नहीं है. My name is Ayush. You're an Arsenal fan. Well, I figured that. I figured that from the comment. Ayush, good to see you. William Saliba is our. Acha, Saliba. I was wondering, Saliba क्या है? Yeah. Yes. Got it now. I'm trying to remember all these people who tell me their real names. There was a Piyush also who was someone, but I keep forgetting. ये एशियन गेम में क्रिकेट राउंड रॉबिन होगा या फिर ग्रुप में? भाई पिछली बार जब विमेन्स टीम गई थी तो ग्रुप्स थे, हाँ, ग्रुप्स थे भाई. एक मिनट, मैंने खोला है इसको. एशियन गेम्स 2023. इसमें क्या है? क्रिकेट का क्या है? ये रहा. One of 37 sports. हाँ, ग्रुप में होगा. और ये ऑफिशियली, किसी ने कमेंट किया था, इट्स ऑफिशियली गोइंग टू बी अ T20I. तो बिल्कुल ये अंतरराष्ट्रीय स्टेटस के मैचेस होंगे, व्हिच इज व्हाई आई थिंक इट्स अ गुड चांस फॉर शिखर धवन एंड whichever team he is chosen to lead. India, I think, will walk back with a gold. The women's team came so close last year in Birmingham to winning a rare Commonwealth Games gold medal, but कम वक्त ऑस्ट्रेलियन टीम ने एक बार सबके उम्मीदों पर पानी डाल दिया. तो पर लोग, आई मीन, अगर शिखर धवन ना भी गए, कोई सी भी टीम जाती है, हमारी बी टीम या ए टीम, जो भी कहो उसको, चांसेस तो बेहतरीन है. गोल्ड है. चाइना में पिचेस कैसे होते हैं? वेल, इट्स ऑन मैटिंग विकेट्स. वो लोग मैटिंग पे खेलते हैं ज्यादा. बट फॉर अ टूर्नामेंट of this stature, they're going to put turf wickets, obviously. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कोई मैटिंग विकेट पे नहीं होता है. बट इनके जो लीग्स है ना, इनके लीग 2 और 3 है, एंड द सेम विद जापान. they're largely played on matting wickets. मेरा एक दोस्त है, वो मेरा फॉर्मर टीममेट है, वो पिछले 2 साल से जापान पे है. तो ही सेज कि वहां पे कुछ टर्फ विकेट्स हैं. तो अगर जापान पे हैं तो चाइना में भी होंगे. बट अगेन, द स्टैंडर्ड देयर इज स्टिल, इट्स सो रिलायंट ऑन
on Asians and NRIs and expats कि वहाँ पे जो कि local players बहुत कम है Chinese or Japanese. But for the Commonwealth Games, it'll be a proper turf wicket because the ICC has given this international T20I status. So no worries about that. बारिश हो रही है, it's raining. कहाँ बारिश हो रही है भाई? थोड़ी बारिश यहाँ भेजो please. Who are favorites? England versus it's on a knife edge, Pawan. I think England are going to take this one by a whisker. And obviously, not the big margin that Zach Crawley had said, but मुझे लगता है कि England are going to fight their way back in this one. I think James Anderson, he's been really flat. I think Anderson and Broad are going to do something special when Australia bat again. Just feeling it. To be honest, cricket usually takes a backseat during these multi-sports events. Bilkul, because it's a foreign sport for most of the spectators. The competition is diluted. कुछ top teams तो भेजते नहीं है कोई क्योंकि अक्सर there's some other series going on. So of course it'll take a backseat, but it's going to clash with the World Cup. So everyone's going to be watching the World Cup. So no pressure on the Indian team to go to China and win a gold medal. So I think it'll be good. एशियन गेम में तो यार हमारी सारी कंटिजेंट जो भी हो रेसलिंग हो बैडमिंटन हो टीटी हो शूटिंग हो मेडल्स तो भरपूर इंडिया के तो मेडल्स तो भरपूर आते हैं मोर सो एट द कॉमनवेल्थ गेम्स बट अगेन इट्स द एशियन गेम आई मीन बाउंसी टर्निंग्स भाई देखो मैं चाइना कभी गया नहीं हूं मैं कभी वहां खेला नहीं हूं and this is the first time that any proper international men's cricket will be played there so we have very little sample size but from what I've heard from people who played there in China and Japan इनका जो domestic club level है वो matting पे होता है but like I said you cannot play international cricket on a matting wicket so these are going to be fresh pitches I don't know exactly how much bounce. I mean, because it's China and it's the Asian Games, so we really cannot give any accurate prediction of how it'll be. But if they are fresh pitches, like we believe, तो हल्का सा उसमें bounce रहेगा. Because look, they're not going to get the Chinese to go there and roll those pitches. It's an Asian Games. It's ICC sanctioned teams are going, so there will be proper experts who know this. जो ये करते हैं, day in day out. So definitely you will expect sporting wickets. Who will be two favorites to qualify from World Cup? Bhai, easy. Zimbabwe, Sri Lanka, West Indies गई. Which is more competitive, cricket or football? Football, hands down, यार कोई सवाल ही नहीं है इसमें. Good morning, Jamie bhai. It's raining. अच्छा, you're in Mumbai. मुंबई में तो यार जैसी जून 10 आता है, बारिश, 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 बारिश. Some reports came that Dhawan will be the reserve opener in the 2023 World Cup. No, no. वो होगा तो वो केएल राहुल होगा. हालांकि मैं उसके फेवर में नहीं हूँ केएल राहुल के, but between the two, I would still say rather regretfully that they would go for KL Rahul. I think Rituraj Gaikwad also is a good chance. Did England miss a trick by not playing Wokes? Look, Wokes has got a damn good record, Atul, at Lords, but they wanted pace, and Josh Tongue has got a bit of pace. So again, you look at Chris Wokes, he does so well at home. इंग्लैंड के बाहर तो आजकल वो नहीं चले, but I don't know, it's tough, man. Maybe if Anderson doesn't take wickets this match, then Wokes will come. The Wokes का time आएगा. Ayush keh rahe, interesting piece of trivia. India's most successful sport at the Asian Games, actually athletics. Competition in TT, badminton, wrestling, shooting, it is. The Asian Games is tougher than the Commonwealth Games because China and a couple other countries aren't there. But still, India does well there overall. Tom Latham is here. Aren't you playing for New Zealand? As you said, we only have 4 tests this year. Does that mean players like Sarfaraz and other top domestic forms have to wait longer? Absolutely. Fact. They'll have to wait longer. Thank you, Subodh. Thank you. शुक्रिया रखा है ट्रॉफी पीछे बहुत ट्रॉफी है मेरे पास वैसे 3 तो यहाँ दिखा दिया मैंने आपको और 1 2 3 यहाँ पे है बट बहुत रेयरली मुझे मिलता है ट्रॉफीज तो felt good. Thank you, Subodh. Thank you. Which would be more shocking? India not qualifying for 2008 Olympics hockey or West Indies not qualifying for the World Cup? I remember when India did not qualify for hockey, I would say India because West Indies we've seen इनका decline काफी साल से चल रहा है तो I would say hockey 2008. Would you go with Bairstow, the batsman keeper, or Folks? Somebody asked this question earlier this week. I said Folks should definitely play. He's got a good test record as batsman, but somehow teams tend to favor people who've been loyal,
who've been consistent. Also, these multi-format players, no? So I understand why Johnny Bairstow was given because he was so good before he got that freak injury. The guy was averaging like on 90 something in Test cricket last year. Without those numbers, he wouldn't have recalled. But the team has a lot of faith in him. But you're saying his keeping is not up to the mark. So it's a tough one. I would ideally like to say see Johnny Bairstow bat and folks keep, but मैं कौन हूँ? Do you follow football? No, man. I never got into football. I tried. I watch the World Cups every 4 years. I don't watch many club many. I don't have any club. I bought myself like I think I wore it on one of these streams recently. I bought myself a Barca shirt because my son goes to the Barca academy. So just to support him, I got a Barca shirt. And last year, especially after the World Cup, he liked Messi. आजकल तो he's into Ronaldo. So I bought myself a Messi jersey just to keep my son happy. मुझे फुटबॉल में ज्यादा कुछ शौक नहीं है यार. Thoughts on Mohsin Khan? He's good. He's good. आप फॉरेनर हो पर इतना अच्छा हिंदी कैसे बोल रहे हो? दोस्तों आप लोग अ, अनीश मंडल को आप लोग जवाब दीजिए तब तक मैं इनके लिए एक लिंक डालता हूं. ठीक है? दिस द लिंक आई ऑलवेज यूज. तब तक फील फ्री एनीवन टू लेट आवर न्यू फ्रेंड अनीश नो कि मैं हिंदी कैसे बोलता हूँ. ठीक है? तब तक मैं यहाँ पे एक लिंक डालता हूँ. ठीक है? देन यू कैन वो खुद ही समझ जाएंगे कि क्या सीन है. ठीक है? अनीश 1 मिनट होल्ड करना. ठीक है भाई? लो जी. कहाँ गए अनीश अनीश अनीश? यू गाइस कैन रिप्लाई. किसी ने रिप्लाई किया? अनीश ये लीजिए आपके लिए. अनीश अनीश ने तो इतनी कॉन्फिडेंस से बोल दिया कि मैं फॉरेनर हूं बिना जानकारी लेके. कोई बात नहीं. फॉरेनर तो मैं नहीं हूं. मेरे दादाजी यहाँ जन्मे, मेरे पिताजी यहीं जन्मे, मैं यहीं जन्मा हूं. आपने कह दिया. ठीक है? आपने मुझे पराया समझा. कोई बात नहीं दोस्त. दिखता हूं शक्ल से फॉरेनर. लेकिन ये वीडियो मैंने आपके लिए डाल दिया. अनीश आप वो देख लीजिए. बेन डकिट में सहवाग कहां से घुस गया? वेल नो बेन डकिट आशुतोष. बेन डकिट हैज बीन डूइंग phenomenally when he was dropped in 2017. उसके बाद he has transformed himself in list A cricket for England Lions. T20 लीग्स ये जो खेलता है ना ये बंदा, ये अग्रेसिव था ही पहले से. आई वाज शॉक्ड टू सी हिम एक्चुअली कॉल बैक. मैंने कहा यार ये तो बंदा, ये तो अपने विकेट के पे कुछ प्राइस लगाता नहीं है. ये तो यहाँ आड़ी तेजी शॉट्स लगाता है. बट लुक व्हाट इज डन. ही इज टेकन. दैट्स व्हाई बेसबॉल जब से आया है तो ये T20 और वनडे टाइप प्लेयर्स, ये नॉन टेस्ट प्लेयर्स, इनके फेवर में है बेसबॉल. तो दैट्स व्हाई बेन डकेट was called back. He was called back on his virtue of stacking up a lot of white ball runs, sweeping reverse sweep. So that's why he was taken to Pakistan. और वहां पे वो चल गया. अरे सुबोध, शुक्रिया. आपने इतना प्यारा जवाब दिया अनीश भाई को. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. Stark's red ball form is very bad. Absolutely, Atul. Someone asked me, किसी ने मुझसे पूछा कि वो क्यों नहीं खेल रहे मैच. मैंने कहा भाई हो सके कि वो जब वो रिटायर हो वनडे क्रिकेट से तो he could arguably be Australia's number 1 all-time best one-day bowler. But यार टेस्ट क्रिकेट में काफी साल से उनका फॉर्म खराब है. तो या it's nothing new, Atul. Akash Madwal for Asian Games, possible. Ashutosh Bajpai gave his 15 and he mentioned it. What do you think if Ganguly was appointed coach instead of? यार गांगुली कोच तो नहीं बन सकते यार. नहीं, दादा कोच लायक नहीं है. नहीं है, नहीं है, नहीं है. सॉरी, मुझे लगा फॉरेनर. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. आप पहली बार नहीं है. 40 साल से ऊपर हो गए लोग ने ये गलतफहमी किया मेरे साथ. अब तो मैं झेल लेता हूँ. इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल खोला अपना दूसरा वाला जिसका लिंक मैंने डाला. इतनी बार लोग पूछते पूछते कल भी मुझसे 2 लोग ने पूछा मैच के बीच, आप कहां से आए हो, वेयर यू कम फ्रॉम. तो होता है भाई, आई गेट इट. What's your opinion on Major League Cricket? It's inevitable. I was on a podcast before podcast became a thing. This would have been 2010 or 11. I was on a podcast. हर्षा बोगले थे, मैं था, और उस टाइम जो अमेरिकन क्रिकेट बोर्ड के जो प्रेसिडेंट थे, मैं उनका नाम भूल गया. He's an American fellow. He'd been part of some tournament organization for some major event, Olympics या फीफा. मैं उनका नाम भूल गया. ये 2010-11 की बात है. I was on a podcast with Harsha Bogle, me and him, and Harsha was
was the guest. I mean, was the anchor, the analyst, and he had gotten my perspective, of course, being at that time a cricket for journalist, as well as an Indian American mix. He wanted my perspective also because मैंने अपना कॉलेज और कॉलेज के 2 साल बाद जब मैं यूएस में था उस समय, तो मैंने काफी क्लब क्रिकेट और मैंने यूनिवर्सिटी लेवल मैंने क्रिकेट वहां पे खेला था। तो उस पर्सपेक्टिव से हर्षा ने मेरी राय ली, एंड आई सेड दैट टाइम बिकॉज द मैं उस जेंटलमैन का नाम भूल गया। वो कह रहे थे कि देखो हम चाहते हैं कि हमारे अमेरिकन प्लेयर्स क्रिकेट खेले, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट यहाँ पे आए, एंड ही वाज गोइंग ऑन। तो मैंने कहा था, जब जब मेरी बारी आई बोलने की, मैंने कहा सर मैं आपकी बातों से सहमत हूं, मानता हूं, लेकिन मेरा टेक ये है कि आप ये मत एक्सपेक्ट करना कि 2010 के 10 साल बाद आपके कॉकेशियन व्हाइट प्रॉपर अमेरिकन प्लेयर्स क्रिकेट खेलेंगे, क्योंकि क्रिकेट इतना नया स्पोर्ट है और वहां पे बहुत सारे स्पोर्ट्स इतने एम्बेडेड है उनके सिस्टम में कि वो एक नए स्पोर्ट को हो सके कोशिश से या जो भी आपके बेस्ट एफर्ट्स हो सके कि वो क्रिकेट से जुड़े, लेकिन उनको इतना साल लगेगा कंपेटिटिव होने में कि आप डोंट माइंड, आप ये मत सोचिए कि आप खुद एक अमेरिकन टीम खड़ी कर पाओगे जो अंतरराष्ट्रीय इवेंट्स खेलें। आप टीम भेजोगे लेकिन उस टीम में होंगे इंडियंस, Pakistanis, Sri Lankans, West Indians, it'll be an expat. It'll be Asian or Caribbean or South African. It'll be people from cricket playing countries who've settled there or who've gone to work there. It might even be second generation Indians, Asians, whatever it is. तो मैंने कहा आपकी खासियत यानी कि अमेरिका की खासियत ये है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया का सबसे बेस्ट है। आप स्कूल लेवल तक वहां के छोटे छोटे गांव में भी आपको फुटबॉल फील्ड, बेसबॉल फील्ड, तो आपके पास ये सुविधाएं हैं और आप होस्टिंग में आप अव्वल हो, आप नंबर 1 हो स्पोर्टिंग इवेंट्स को होस्ट करने में। तो मैंने कहा था उनसे कि आप 10 साल बाद आप अपने आप को एक क्रिकेट होस्टिंग नेशन बनाइए। और क्या हुआ मेरी बातों के बाद, कुछ ही साल में वो फ्लोरिडा में वो स्टेडियम बन गया। इट्स होस्टेड इंटरनेशनल क्रिकेट, it's hosted T20Is. Next year's T20 World Cup was supposed to be in America. Maybe it might not be. Now you see in Texas, Houston, Dallas, वहां पे 3-4 अंतरराष्ट्रीय quality stadiums आ चुके हैं। और अब to come back to the question asked about Major League Cricket, now IPL-based franchises, conglomerates, big Indian companies are investing in a T20 franchise in America because now America has got their hosting right. So that's my point. Major League Cricket was inevitable because of what all I said here. And market, North American market, दोस्तों आप वहां पे अच्छे स्टेडियम के अंदर आप ग्लोबल सुपरस्टार्स डालेंगे तो हमारे जो देसी भाई बहन हैं, जो हमारे ऑस्ट्रेलियन, ब्रिटिश, कीवी, कैरेबियन, कितने कैरेबियन लोग हैं वहां पे, तो जाहिर सी बात है कि आपको वहां पे हाउसफुल स्टेडियम्स मिलेंगे। सो द क्वेश्चन इज, आई एम ऑल फॉर इट बिकॉज इट विल ड्राइव द स्पोर्ट, पीपल विल मेक मनी, it's inevitable. Sorry, that was a long answer to a question. Where did I lose you? सुबोध ने कहा था, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्रसिद्ध कृष्णा को लेकर मैं इतनी बार मैं बात कर चुका हूँ। He should be in India's World Cup squad and he should have been in India's WTC squad. Your favorite IPL team? है, मैं किसी IPL टीम को सपोर्ट नहीं करता यार। Why Indian players are not focusing on scoring at the square leg and not down the ground? I saw no one off drive or note in the WTC final. I don't know. You'll have to ask them. Um, It's a good question. I don't know. That's a किसी टेक्निकल एस्पेक्ट से पूछना पड़ेगा। आपको लगता है इंडिया को टेस्ट फॉर्मेट में आईपीएल जैसा टूर्नामेंट करवाना चाहिए? दैट विल हैव इंडियन टेस्ट? नहीं भैया, टाइम ही नहीं है यार, कैलेंडर में समय नहीं है कुछ और मैच करने के लिए, हो नहीं पाएगा। क्रिकेट वुड बी सक्सेसफुल इन यूएस इफ इट्स प्लेड इन हाई स्कूल और कॉलेज, लाइक एग्जैक्टली लाइक आई वाज सेइंग, बट वो नहीं हो पाएगा ना। वो बोलेंगे क्या, इनके पास ऑलरेडी इतने स्पोर्ट्स हैं, हो नहीं पाएगा। या एग्जैक्टली व्हाट अ लॉट ऑफ यूएस टीम, बिल्कुल, ये तो मैं खेल चुका हूं यार। कुछ आपको याद होगा 2004 का जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी था यूके में, एन अमेरिकन टीम हैड गॉन फॉर द फर्स्ट टाइम। वन ऑफ दोस प्लेयर्स, इनका नाम था डोनोवन ब्लेक, वेस्ट इंडीज के थे वो। ऑलरेडी उस टाइम में वो अपने लेट 40s में थे। मैं उनके साथ मैंने एक मैच खेला था बॉस्टन शहर में। तो हमने पूछा उनसे, सर आपको आपको मतलब व्हाट वाज द एक्सपीरियंस? उसने कहा भैया, तो एडम गिलक्रिस्ट ने हमको जो ठोका एक मैच में, और वैसे नेथन ऑस्ट्रेलिया मैच, तो ही सेड हम लोग उस लेवल पे compete नहीं कर पाएंगे। ये मैं 2005 की बात कर रहा हूँ, बिफोर आई द ईयर दैट आई लेफ्ट अमेरिका टू कम बैक टू इंडिया। तो
मैं देख चुका हूँ वहाँ का स्टैंडर्ड, इट्स गॉटन मच बेटर। आई मीन व्हेन आई वाज देयर, मैं वहाँ पे था 2000 से लेके 2005 तक। यार हम लोग इतने क्रिकेट खेले वहाँ पे, वी वर प्लेइंग इन इंडियाना, ओहायो, न्यू जर्सी, रोड आइलैंड, पेंसिल्वेनिया। हम लोग एक ट्रॉफी जीत, इतनी बड़ी हम ट्रॉफी जीत के आए थे, मेरी कॉलेज, मैं अपना कॉलेज का कैप्टन था। We played in Rhode Island, Boston. So already the expat community was playing thriving cricket. Ab with USA cricket, getting more money, getting infrastructure, अब वहां का डोमेस्टिक सीन खुल चुका है। बट मेरा पॉइंट ये है कि इनके जो टीम्स हैं वो बाहर के लोग से ही बनेंगे, उसमें कुछ प्रॉपर अमेरिकन नहीं होगा उसमें। In your opinion, how has basketball been able to grow at a rapid rate? Shorter, quicker, more aggressive, easier to market. A lot of countries play it. I think after football, basketball is probably played in the most countries. So it's very, very natural. West Indies are themselves be blamed as dropping players from minor and major disputes destroyed their team in the last. Yeah, looks like it. No? And also they had all this problem. The players wanted more money. That whole row between the board and the players agency होता है वो। सर आपका कभी लाइव नोटिफिकेशन आता नहीं है भाई, पता नहीं। मैंने तो एक दूसरे फोन पे और दूसरे टैब पे मैंने अपना लगाया है ताकि मुझे मिले और मुझे दोनों मिले। तो पता नहीं, शायद कुछ या तो आपकी तरफ से प्रॉब्लम है या फिर यूट्यूब का एल्गोरिथम खराब है। ये तो यार मैं पहली बार सुन रहा हूँ किससे, तो आई डोंट नो। Chalo, let's wrap it up now. Boston University is, yes, yes. I played there. I played at Boston University. I played for the MIT team once when I moved to Boston. वहाँ बहुत है यार, बहुत है। Ben Duckett and Zach Crawley किया टेस्ट मैच के लिए टेक्निकल परफेक्ट है। जैक क्रॉली है, बेन डकेट नहीं है, लेकिन आजकल मतलब आजकल क्या, वीरेंद्र सहवाग भी नहीं थे टेक्निकली करेक्ट। आपके पास अगर जिगरा हो, आपके पास अगर डिसेंट टेक, मार्कस ट्रेस्कॉथ, वन ऑफ इंग्लैंड्स ग्रेटेस्ट बैट्समैन, ही हैड नो ग्रेट टेक्निक। टेक्निक इज हाईली ओवररेटेड। आपको स्विफ्ट फुटवर्क, स्विफ्ट हैंड आई कोऑर्डिनेशन और जिगरा चाहिए। आप बेन डकेट हो या क्रिस गेल ने 300 मारे यार, कौन सी टेक्निक से खेले वो? आपके पास जिगरा होना चाहिए बस। नेथन एस्टन ने टेस्ट मैच में खत्म कर दिया था यूएसए को। यस, correct, correct. But the guy I was speaking to, Donovan Blake, I think he played the Australia match because he told me कि गिलक्रिस्ट ने मुझे एक ऐसा शॉट मारा, मैंने कहा भैया ये मैं कहाँ फंस गया। वो स्कोर कार्ड मैं निकाल के दूंगा आपके लिए। एक सेकंड, लेट मी गेट दैट स्कोर कार्ड बिकॉज लॉट ऑफ यू हैव 2000 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। अमेरिका अमेरिका ने दो मैचेस खेले उस दिन, न्यूजीलैंड वर्सेस यूएसए। हाँ, क्लेटन लैम्बर्ट वाज देयर। क्लेटन नहीं, ये एक बंदा था। Hang on, his name was Donovan Blake, if I'm not mistaken. I'm just getting you that scorecard, if I'm right. एक सेकंड ना। हाँ, इन्होंने, there you go, Donovan Blake batted at number 10, LBW Gillespie 0, 24 ओवर में 65 all out, and here you go. Adam Gilchrist 24 not out, and Donovan Blake bowled 1 over for 7 runs. If I'm not mistaken, it was in that 1 over that apparently Gilchrist hit him for a shot. और हम लोग वहां बैठे थे उनके पास, I remember it. It was a nice late summer, early fall day just outside of Boston in an area called Roxborough, और मैं पता नहीं, एक ग्राउंड था वहां पे, सारे वेस्ट इंडियंस, जमैकन्स, एंटीगन्स, वेस्ट इंडियंस। और हम लोग कुछ दो तीन इंडियंस थे, दो तीन पाकिस्तानी थे, एक ऑस्ट्रेलियन था, फ्रेड। और हमारी टीम का मैच था, तो वो देखने आए थे, तो वहां बैठे थे वो, सिटिंग ऑन वन ऑफ दोस फोल्डेड चेयर्स, ही हैड अ बियर, पेड़ के छांव के नीचे। और हम लोग ने पूछा आपसे, उनसे कि सर आप तो एक अंतरराष्ट्रीय मैच आप खेल के आए हो। एंड ही सेड या मान, इट वाज ग्रेट, बट वो गिलक्रिस्ट तो मतलब दैट टाइम वी रियलाइज कि यार कितना बड़ा गल्फ है अमेरिका में और बाकी टीम्स में। सहवाग के पास स्किल कम था, विल बिल्कुल है, बड़ा 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 तगड़ा। SS98 is also emulating Ashutosh and he's giving his team Shikhar, Jaiswal, Ishan Kishan, Tilak, Rinku, Dube, Tewatia, Mohsin, Saishwar, Khalil, Chetan Karia. Ishan Kishan will be in India's World Cup squad, so he won't be there. But most of the other names could be there in your unique Asian Games 11. Hmm.
2011 World Cup, the Canadian team was absolutely hammered by everyone. It was essentially the Canadian team, Ayush, that played the 2003 World Cup. Even that was every single. You look at Papua New Guinea, where Geraint Jones went. You look at all these Oman, UAE. इनके players local कहाँ पे है? वो कोई पंजाबी है ट्रक ड्राइवर, वो कोई पाकिस्तानी है सबवे में काम करता है वो. Expats will always dominate these teams from countries where cricket has not traditionally been part of their sporting culture, sporting fabric. USA. Ireland is different. Scotland is different because they have proximity to England. The Netherlands relies on a lot of South African players, but because there's a culture of cricket, a very small culture in the Dutch sporting system. Bas de Leede, I remember there was Tim de Leede, so many players. That 1996 में पहली बार जब हमने देखा था हॉलैंड की हमने कहा यार हॉलैंड की टीम मैं बात कर रहा हूँ 96 की मैं 15 साल का था मैंने कहा यार इनकी टीम में सारे इंडियंस होंगे पाकिस्तानी होंगे नहीं their players were majority of actual Dutch players because a lot of Dutch players again European proximity बहुत Dutch players इनके काउंटी क्रिकेट में खेलते आ रहे हैं 70s से and so that's one team बाकी ओमान पकड़ लो um, whatever it is, most of these European teams and like from North America, they'll always be full of expats. Nepal is different, of course, because of the again the proximity to India. But yeah, that's Foxborough. No, no, I was talking about Foxborough. Of course, I've been there, Gillette Stadium. This was Roxborough or yeah, you get off Route 9 and you go down. वो थोड़ा एक ग्रंजी एरिया था वो मैं उसका नाम भूल गया एनीवेज वहां पे बहुत वेस्ट इंडियंस थे और हम वहां पे साल में 2-3 बार वहां पे मैचेस खेले जा रहे थे द अदर प्लेस वाज there's actually a ground near Foxborough. Foxborough में भी एक क्रिकेट एक फील्ड था खेत के बीच किसी ऑस्ट्रेलियन या ब्रिटिश आदमी ने वहां पे जमीन खरीदी थी और उसने वहां पे ग्राउंड बनाया था मुझे याद है it was because we used to cross Gillette Stadium and then we take a right to play that ground यार क्या यादें ताजे हो गई मेरी आज what teams will be there in Asian games वही अपने जो होते हैं श्रीलंका पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश थाईलैंड चाइना how good is Dewald Brevis आज देखो डिविलियर्स से मत किसी ने उनको बोल दिया एबी बट ही इज गोना बी वेरी वेरी गुड बट उसको डिविलियर्स से कंपेयर ना करें तो अच्छा है यार लड़के के लिए this time around the US team will have great expat players you mean yeah बिल्कुल what's led to downfall of Irish cricket यार पता नहीं यार मैं कभी गया नहीं हूँ आयरिश आइलैंड तो मुझे इसका जवाब तो नहीं है मेरे पास um, पता नहीं I think they've lost a couple players um, again it's strange it's actually a good question because majority of their players play in county cricket a lot of them play leagues now um pata nahi yaar it's I don't know I don't follow Irish cricket that in depth so I don't know the answer इंडिया के पास अच्छे फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर क्यों नहीं है भाई ये सवाल तो कपिल देव के टाइम से आ रहा है इसका जवाब ये है कि ट्रेडिशनली पिछले 7-8 साल से पहले तक हमारे जो पिचेस है यहाँ पे वो फास्ट बॉलिंग के लिए कंड्यूसिव नहीं थे अगर किसी युवा खिलाड़ी को फास्ट बॉलर बनना था तो उसको उसको कमर कस के बॉलिंग डालना था कि हमारे ट्रैक्स में बाउंस तो है नहीं स्विंग और पेस नहीं है तो इट ट्रेडिशनली इज बीन वेरी टफ टू टेक अप फास्ट बॉलिंग फिर अचानक एक ऐसा मोड़ आया 7-8 साल पहले कि अचानक फास्ट बॉलिंग की लाइन बहुत लंबी हो गई अच्छे फास्ट बॉलर्स आए और इसका एक कारण था कि 5 साल तक इंडिया ए का जो टूरिंग सीन था वो बहुत मजबूत था तो टीम्स मोहम्मद सिराज को आप देख लीजिए मोहम्मद सिराज जब दिसंबर 2020 में उन्होंने एमसीजी टेस्ट में अपना डेब्यू किया था तो वो रुकी थे लेकिन वो 4 साल तक वो कंसिस्टेंटली वो इंडिया ए टूर्स पे जा रहे थे इनके पास कुछ 62 या कुछ विकेट्स थे ऑलरेडी for India A. So when you have a good system which is encouraging fast bowlers, ऊपर से क्या होता है कि रोल मॉडल्स राइट अब ट्रेडिशनली इंडिया में बैट्समैन हमेशा से अच्छे आए हुए हैं स्पिनर्स अच्छे हुए हैं जब आपके पास कुछ सामने कोई रोल मॉडल फास्ट बॉलर नहीं है तो जाहिर सी बात है कि आपका कल्चर में फास्ट बॉलिंग बनने का एक रास्ता नहीं आएगा कपिल देव ने वो तोड़ा श्रीनाथ ने वो तोड़ा श्रीनाथ को देखकर फिर एक इरफान पठान आए एक जहीर खान आए तो यू नीड टू सी फास्ट बॉलिंग आइकॉन्स
फास्ट बॉलिंग हीरोज अगर वो नहीं दिखेंगे, अगर आपको गावस्कर, विश्वनाथ, अजरुद्दीन, वेंगसारकर, श्रीकांत, संदीप पाटिल, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, अजहर, गांगुली, सहवाग, अगर आपको यही दिखेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप बैट्समैन बनोगे, राइट? अब ऑस्ट्रेलिया में इनके पास तो 100 साल से फास्ट बॉलर्स हैं, तो उनके फास्ट बॉलर्स हमेशा सबसे बेस्ट होंगे। सो इट कम्स डाउन टू व्हाट डू यू सी, अब आपने पूछा ऑलराउंडर के बारे में, भाई बंदा बॉलिंग करे कि बैटिंग करे, अजित अगरकर उन्होंने बहुत बहुत, आई थिंक इज इंडिया टॉप 4 और 5 वन-डे विकेट टेकर्स एवर। अगरकर पहले बैट्समैन थे, वो पाकिस्तान गए थे 96 में, 97 में एज अ बैटिंग ऑलराउंडर, उन्होंने वहां पे 100 मारे। तो लोकल अखबारों में मुंबई में ये ये खबर थी कि नेक्स्ट हमारे ऑलराउंडर आ गए। Within 1 year, Agarkar had almost given up batting and he became a fast bowler, a proper fast bowler. तो एक जो जरूरी होता है बैलेंस बिटवीन इक्वली गुड एट बॉलिंग, इक्वली गुड एट बैटिंग, वो इंडिया का हमेशा एक वीक एरिया रहेगा, बिकॉज हमारे खुद कल्चर में लोग कंफ्यूज हैं कि हम बैट्समैन बने या बॉलर बने। अगर आप में वो काबिलियत है कि आप दोनों करें, तो आपकी बॉडी की लोड उसको सपोर्ट नहीं कर सकता। वी सॉ इट with Hardik Pandya. He hardly bowls anymore. So it's very very tough. It's fitness, it's culture, it's system. बहुत सारे factors हैं. Anyways, we've gone way beyond schedule. Last question: if Nathan Lyon doesn't play remaining test, how do you feel it affects chance of Australia winning the Ashes? It will affect because it's Nathan Lyon who's near 500 wickets. He's played 100 tests in a row, but they have Todd Murphy. So I think Todd Murphy is a very good understudy. But yes, जस्ट लाइक 2005 में ग्लेन मैकग्रा के बाहर होने से इंग्लैंड को बहुत बड़ा बोनस मिला, अगर लायन आउट होते हैं तो बहुत बहुत बड़ा नेगेटिव होगा ये ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए। Anyway, दोस्तों, thank you all for joining. Lovely questions. Sorry I couldn't answer all your questions. A lot of the answers were very long from my part, but I like today's session. कुछ अलग हट के सवाल आए। Love all of you. Have a great day. Have a great Friday. I will try and get you on the weekend. Notification button दबाइए, बेल आइकॉन दबाइए और जाते जाते एक बार लाइक बटन जरूर ठोकिए। Have a great weekend. Love you all. जय हिंद।